Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video again we will be solving a problem for claiming exemption under section 54. Page number A74, question number 30. So let me read out the question for you. During the previous year relevant to current assessment year 2019-2020, an assessee sold a residential property for 40 lakhs 15,000. Index to cost of acquisition is 9 lakhs 87,250. यहाँ पे एसएससी का नाम स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है, तो हेडिंग क्या आएंगी? कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर, यहाँ पे हम थोड़ी स्पेस छोड़ रहे हैं, एज द नेम ऑफ द एसएससी हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2019-2020. फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स अमाउंट. हेडिंग क्या आएंगी? कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर, एसएससी का नाम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2019-2020. फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स अमाउंट. तो यहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव क्या दिया हुआ है? 40 lakhs 15,000. Selling expenses are not specified in the question. Less transfer expenses 0. Hence net consideration will be 40 lakhs 15,000. अब यहाँ पे आपको net consideration में से क्या subtract करना है? Index to cost of acquisition. How do we calculate index to cost of acquisition? Cost of acquisition into previous year index divided by index of the year in which the asset was purchased. But यहाँ question में instead of specifying cost of acquisition डायरेक्टली आपको इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू दी हुई है, विच इज 9,87,250. तो डायरेक्टली नेट कंसिडरेशन 40 lakhs 15,000 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? लेस इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज 9,87,250 स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन. 40 lakhs 15,000 में से 9,87,250 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या बचा? 30 lakhs 27,750 विच वी राइट इट एज कैपिटल गेन. अब ये कैपिटल गेन में से आपको क्या करना है? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 कैलकुलेट करना है. How do we calculate exemption under section 54? Exemption under section 54 में आपको exemption के लिए condition क्या है? The assessee should sell his residential property and again he should purchase a residential property in India and also he can deposit amount in any bank for under capital gain scheme. तो अब आगे बढ़ते हैं. Let us see the situations. Calculate exemption under section 54 for capital gain in the following situations. Situation 1, after the sale of house he purchased an old house for residential purpose for 26 lakhs 30,000. तो पहला सिचुएशन क्या है? प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसे आ रहे हैं उसमें से एक पुराना घर खरीद रहे for 26 lakhs 30,000. तो here is the working notes. The assessee will be eligible to claim exemption if purchase of house or construction of house is for residential purpose in India. एसएससी को एग्जेम्पशन तभी मिलेगा अगर वो इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या फिर इंडिया में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे क्या बोला? परचेज ऑफ ओल्ड हाउस. तो यहाँ पे वो एसएससी क्या कर रहे हैं? एक पुराना घर खरीद रहे. तो परचेज ऑफ ओल्ड हाउस इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन. तो परचेज ऑफ ओल्ड हाउस इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन एंड एग्जेम्पशन विल बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स. एक एलिजिबल अमाउंट, दूसरा कैपिटल गेन. तो यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज्ड हाउस. कितने में खरीद रहे वो घर? पुराना घर 26 lakhs 30,000. कैपिटल गेन का अमाउंट क्या है आपको? 30 lakhs 27,750. तो एक कॉस्ट ऑफ परचेज हाउस दैट इज एलिजिबल अमाउंट कितना है? 26 lakhs 30,000. दूसरा कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है? 30 lakhs 20,750. इन दोनों में लिस्ट अमाउंट कौन सा है? 26 lakhs 30,000. तो यहाँ पे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्या मिलेगा आपको? 26 lakhs 30,000. अब ये कैपिटल गेन 30 lakhs 27,750 में से 26 lakhs 30,000 एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 हटा दिया, क्या बच रहा आपको? 3 lakhs 97,750 विच इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. नेक्स्ट कमिंग टू सिचुएशन 2. ही परचेज्ड अ न्यू बिल्डिंग फॉर कमर्शियल पर्पस फॉर 25 lakhs. सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन की कंडीशन क्या है? ही शुड purchase the property for residential purpose, but situation 2 क्या बोल रहा? He has purchased the property for commercial purpose, hence he cannot be allowed exemption for situation 2. Purchase of building for commercial purpose, that is for non-residential purpose, is not allowed as exemption. Next, coming to situation 3, he purchased tenancy rights for his residence for 30 years with the landlord for rupees 19 lakhs 50,000. एसएससी क्या करे? टेनेंसी राइट्स ओनर्स के पास से खरीदे for 19 lakhs 50,000 for 30 years. तो टेनेंसी राइट्स खरीदने का मतलब the assessee has not become the owner of the property. किराएदार अगर मालिक के पास से कुछ टेनेंसी राइट्स खरीद रहे लैंडलॉर्ड के पास से,
then it doesn't mean that the tenant has become the owner of the property. तब तक उन्होंने खुद कोई प्रॉपर्टी खरीदते नहीं, he is not allowed any exemption. तो यहाँ पे देखिए purchase of tenancy rights does not make the assessee the owner of the property, so the exemption is not allowed. Coming to next situation, purchased a house for residential purpose in Paris city, Japan for rupees 25 lakhs. Section 54 में exemption का condition क्या है? He should purchase property in India. अब यहाँ पे ये बंदा residential purpose के लिए property खरीद रहा, but he is purchasing in Paris city, Japan. Hence exemption cannot be given. So purchase of house for residential purpose in a foreign country is not allowed as exemption. Next, coming to next situation, situation 5. He did not purchase or construct a house within stipulated time and failed to deposit money in bank under capital gain scheme. Situation 5 क्या बता रहा है आपको? Property बेचने के बाद he has neither purchased any property nor constructed any property nor he has deposited any amount under capital gain scheme. तभी बंदे को कुछ भी exemption नहीं मिलेगा. As the assessee has neither purchased nor deposited the amount in the bank, exemption cannot be given. अब यहाँ पे ये भी ऐड करना है, as he has neither purchased the property nor constructed the property and has also not deposited the amount in the bank, so the assessee is not eligible to claim any exemption. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. Thanks for your valuable time. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.